to be praised with the people. जिसको लोगों के साथ बहुत ही प्रशंसा चाहिए था, He said, very well, I will do that. उसने कहा कि हम करेंगे। He was exalted even more than that. He was exalted even more than that. और इससे भी ज्यादा उसको ऊंचाई में उठाया He गया। signed a decree. उसने एक नियम को पास किया, From today onwards, आज से लेकर in my land, that nobody should worship any god other than me. मेरा देश में मुझको छोड़कर और किसी की पूजा नहीं होना चाहिए। Is it in your Bible? Yes. आपकी बाइबल में है? In how many of your Bible it is there? कितने लोग का बाइबल में ये बात लिखा हुआ है? The king was very happy. राजा बहुत खुश हो गया। And they came and saw what this Daniel would be doing. वो आकर देखने लगे कि ये दानियल क्या करने वाला है। But this fellow did not care anything about that. लेकिन इस व्यक्ति ने किसी भी बात का परवाह नहीं किया। तेरा नौकरी हो, तेरा नाम हो, मुझे क्या है, मैं प्रभु को डरने वाला हूं। Hallelujah. हालेलुया। Whatever you may do, I चाहे- am God's fear. चाहे तुम कुछ भी जो करो, मैं परमेश्वर का व्यक्ति In हूं। the earlier chapter, the word of God says, इससे पहले वाले अध्याय में हमने देखा, in him was the spirit of God. उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता In था। Daniel was the spirit of God. दानियल में परमेश्वर की आत्मा निवास करता था। In Daniel there was spirit of God. दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता था। Hallelujah. Praise the Lord। Now we have time to read that. Lord willing, we will continue somewhere. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। And this man, as usual, और इस व्यक्ति जैसा चलता वैसे daily 3 times. उसकी रीति के अनुसार 3 बार, वो रीति के अनुसार लिखा है, yes, according to his custom is right. अपनी रीति रीति के अनुसार, 3 times अपनी रीति के अनुसार 3 बार is right. He was praying to God, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता giving thanks to God as he had done. और परमेश्वर की स्तुति करता था जैसे वो किया करता था। Hallelujah. Praise the Lord। പതറുകയില്ല ഞാൻ, പതറുകയില്ല ഞാൻ, പ്രതികൂലം അനവധി വന്നിടിലും വീഴുകയില്ല ഞാൻ, വീഴുകയില്ല ഞാൻ, കഷ്ടങ്ങൾ അനവധി വന്നിടിലും என் காந்தன் காத்திடும், என் பிரியன் போற்றிடும், என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே. என் காந்தன் காத்திடும், என் பிரியன் போற்றிடும், என் நாதன் நடத்திடும் அந்தியம் வரே. Malayalam speaking people, how many of you believe this? Raise your hand and sing, praise the Lord. No life. No life. All have run away to Kerala. All have run away to Kerala. And Anuk has come in that place. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। God is giving you chances. परमेश्वर आपको अवसर देता है। Hallelujah. Praise the Lord। As usual, और उसकी रीति के अनुसार as he was doing every time, हमेशा करता है वैसे ही Daniel was a praying warrior. दानियल एक प्रार्थना करने वाला He योद्धा was the था prime minister of that country. और उस देश का प्रधानमंत्री होकर Yet he had time to pray and spend time with God. और फिर भी प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के सन्मुख में बैठने का समय उसको मिलता था। Hallelujah. Praise the Lord। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How busy he would have been. चाहे कितना भी व्यस्त हो तो भी But he had time to be with his master. अपने स्वामी के साथ समय बिताने का अवसर उसको था। And what was the punishment? और क्या दंड मिला? Living man should be thrown before the praying or the fasting lions. जिंदा मनुष्य को जो उपवास करने वाला उस भूखा शेर के गुफा में डाले The lions were not given any food. और उस शेर को कोई खाना नहीं दिया गया था। So that as the body is thrown into the den, जैसे इस शरीर को उठाकर उस सिंह के मांद में डालते they हैं may catch hold of the body of a man and we eat him on that. और उसी समय में उसको टुकड़ा करके फाड़ कर खाना है। What a wonderful God we have. कितना महान परमेश्वर हमारे लिए है। Today आज in India, भारत में hero worship is going on.
बंद పౌలు శీలను బంధించి చెరసాలలో వేసిన పౌలు శీలను బంధించి చెరసాలలో వేసిన పాటలతో ప్రార్థించగా చెరసాలలో బద్దలాయి 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 పాటలతో ప్రార్థించగా చెరసాలలో బద్దలాయి. What is our keyword? आंख बंद. हमारे मुख्य वचन कौन सी है? पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया विश्वास के लिए क्या करना है? लड़ना है. ये वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद चढ़ाएंगे. पवित्र परमेश्वर तेरे वचनों के लिए धन्यवाद. प्रभु तेरे सामर्थ्य बिना हम विश्वास के लिए लड़ नहीं पाएंगे. मुझे माफ कर. आज वचन सुना हुआ तेरे प्यारों को माफ कर खुदा. ये पूरा हफ्ता विश्वास में गिरे नहीं, विश्वास में मजबूत हो जाए, आत्मिक जीवन में सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ने के लिए माफ कर. इनके संग्रह आदर महिमा गौरव तेरे लिए यीशु मसीह के महान नाम में हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हमारे के साथ बनते रहे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रभु भला है सदा भला है, तुझसा न कोई नहीं. जैसे भी हो डगर गाऊंगा मैं मगर तू सदा